Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Nipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Fed up with inflation, people of illegally occupied Gilgit-Baltistan vows not to vote for PTI again. Tourists flocking to Gulmarg to visit the world's largest Igloo cafe. Integrated sheep development scheme revolutionizing livestock sector of Jammu and Kashmir. And later in our section of Incredible India, we'll take you to witness the festivities of Basant Panchami across the country. The illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan has been facing the wrath of Pakistani subjugation for the last 7 decades. And ever since Imran Khan's PTI government has come to power in the region, things have just turned to worse, especially in terms of inflation. Locals are now completely fed up of PTI rule and want to get rid of it at the earliest. We have a report. Under the PTI or Pakistan Tehreek-e-Insaf administration, illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan have been facing major humanitarian crisis. Inflation is on a rise and unemployment rate doesn't seem to come down. Locals are struggling hard to make their ends meet, but government doesn't seem to pay any heed. Irked by the situation, people have now made up their mind to not cast their vote to PTI. मुल्क एक तबाही की तरफ जा रहा है। फिर भी अगर कोई ये सवाल कर रहा है, हमें तो ताजुब सी लग रही है कि फिर भी कोई कहता है कि आने वाले वक्त में पीटीआई को सपोर्ट मिलेगा। सवाल ही करना यार, पीटीआई को सपोर्ट कैसे मिलेगा? पहले से जो ये लोगों ने किया है, उस पर पहले से जिन्होंने सपोर्ट किया है, उसी पर रातों की नींदें हराम हो चुकी है। हमारा जीना हराम हो चुका है, हमारा सुकून इन लोगों ने छीन लिया है। पहले पीटीआई कह रहे थे, वो कंटेनर में इमरान खान साहब बैठ के कह रहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ बाहर का पैसा लाऊंगा। इसने 2 करोड़ नौकरियां और बाहर का पैसा तो दूर की बात है, हमारी जो थी वो भी छीन लिया। 160 का डालडा मिल रहा था, यहाँ पर 160 का जो घी हमें मिल रहा था, वो आज 450 रुपए का किलो मिल रहा है। अल्लाह इन लोगों का बेड़ा गर्क करे। मजीद हम सोच भी नहीं सकते हैं इनको कोई सपोर्ट करने की। People of Gilgit-Baltistan have been for years bearing the brunt of Pakistan's exploitative policies. They are repeatedly subjected to discriminations, where they are made to pay more amount for almost all goods and services, despite a consistently plummeting per capita income. Locals say that they are highly disappointed with the performance of PTI government and they do not want it to come to power again. खान साहब जो है ना, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, उसका कोई सोच नहीं है कि कम करने का है। अगर इसका आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में उसको कोई वोट नहीं देगा, वो हुकूमत नहीं चला सकता है। मैंने इमरान खान को दिया है, लेकिन अगले दफा उसको नहीं देता हूँ। पीटीआई की जो सियासी जो बसीरत थी, वो इस वक्त में मेरा ख्याल है कि वो दब चुकी है और एक सुनहरा वक्त था। लोगों ने एतमाद किया कि बहुत ही दावे किए, सुनहरा लग रहा था कि मुल्क को हर किस्म के मतलब अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएगा। ये सोचकर मेरे ख्याल से हर किस्म के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उलमा ने सपोर्ट किया, इसी तरह दूसरे लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। मेरा ख्याल है कि अब वो सारे लोग वो मायूस हो चुके हैं। No matter how much solidarity Pakistan's Prime Minister Imran Khan expresses with the people of its illegally occupied Gilgit-Baltistan, but the reality on ground will always remain contrary to Khan's much hyped claims on camera.
be it exploiting their resources or plundering their lands. Pakistan has left no stone unturned in pushing their lives towards complete darkness. It just wants to strengthen its grip over the region and is least concerned with its development and betterment. Moving on, recently the locals in Gizar district of illegally occupied Gilgit-Baltistan brought forth a number of issues like load shedding and poor health sector that they have been dealing with for years. They say the government has failed to take their plights into consideration and has left them to suffer. Take a look. There is anger and loathing among the people of Gizar district of illegally occupied Gilgit-Baltistan, as even after repeated pleas, government has failed to address their needs. Recently, the people in Ishkuman constituency of Gizar highlighted a number of issues that have been left unresolved by the authorities. The major one being the dearth of doctors and poor medical facilities. They said the only LMO or local medical officer that they have in Ishkuman is also being transferred now. Fed up with this apathetic attitude of the government, they threaten to come out on roads if the LMO Ghulam Abbas is removed from their constituency. हमारा ये पुरजोर अपील है सेक्रेटरी हेल्थ से भी और DHO गाकुश से भी कि गुलाम अब्बास को यहाँ ही रखा जाए। अगर उसको यहाँ नहीं रखा, आज तो हम पुरअमर तरीके से यहाँ बाला हुकाम तक अपना जो है ना आवाज़ पहुँचा रहे हैं। अगर उसको यहाँ से हटाया गया तो बिल्कुल हम सख्त तरीन एहतजाज करेंगे और रोड पे आने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तहसील इश्कोमन की वाहिद हॉस्पिटल है। यहाँ जो है ना पूरे तहसील इश्कोमन की जितने मरीज़ है वो यहाँ से सेहतियाब होते हैं। फिल फोर कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई और सख्त से सख्त मरीज़ आता है तो वो यहाँ हमें मेल डॉक्टर की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम रात को भी एक मेल डॉक्टर को फ़ौरन उसकी रेस्ट हाउस से बुलाकर जो है ना हम हॉस्पिटल में ला सकते हैं, लेकिन एक फीमेल को हम रात को यहाँ नहीं ला सकते। लिहाजा मैं आज आप सब की वसातत से तमाम जितने हमारे हुकाम बाला है उस तक मैं ये अपना जो पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि डॉक्टर गुलाम अब्बास को किसी भी सूरत में चटरोकन हॉस्पिटल से जो है ना दाएं बाएं जाने नहीं देंगे। Load shedding is another issue that they have been suffering for years, even after having abundant water resources to generate sufficient hydroelectricity. The long and persistent power outages have thrown their life and business out of order. And this is happening even after the constituency is having 3 powerhouses and the 4th one is in the row. Noticing the injustice done to the people of Gilgit-Baltistan, even the people in the ruling party have started objecting to it. ये हल्का आबी वसाइल से मालामाल है। यहाँ पर आप 50 पावर हाउस भी बना सकते हैं। यहाँ से आप 200 प्लस मेगावाट का पावर हाउस भी बना सकते हैं। यहाँ पर माजी में हमारी मनसूबाबंदी इस तरह की हो गई कि जहां पर पैदावारी सलाहियत के लिए पानी ही मौजूद नहीं है, अभी वसाइल ही मौजूद नहीं, वहां पर हमने पावर हाउसेज बनाया। इस इलाके के अंदर पावर हाउसेज बनाने के लिए इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हम यहां पर बिजलीघर सही मानों में मनसूबाबंदी के साथ बनाए तो हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को बिजली दे सकते हैं। ऐसा बदकिस्मती से यहाँ पे नहीं हुआ। अब भी इस तहसील इश्कोमन के अंदर 3 पावर हाउस है, 4था पावर हाउस भी 2 मेगावाट मेरे ख्याल में इस साल मुकम्मल होने को है। उसके बावजूद भी अगर हम लोड शेडिंग में रहते हैं, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है और मुतालिका जो वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।
2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आज के बाद मुझे ये नहीं कहना चाहिए मैं हुकूमत के अंदर हूं, किसी तरीके से भी जो है हमें ये नाइंसाफी कबूल नहीं होगी। The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have time and again raised their voice against the stepmotherly treatment meted out on them. They blame the incompetent and impassive rulers of the region who are just concerned about filling their own coffers and serving their masters in Islamabad. Next, we move on to Jammu and Kashmir, where an Igloo cafe is emerging as a major attraction among the tourists. Opened at the famous ski resort of Gulmarg, it is claimed to be the world's largest cafe of its kind, with a seating capacity of 40. Have a look. If you're planning to visit Kashmir to soak in its snowy weather, your itinerary must include sipping a cup of coffee or hot kahwa inside an igloo. You no longer have to travel all the way to Switzerland, Finland or Canada to have such an experience, as the newly opened Igloo Cafe in Gulmarg is all set to be at your service. Popularly known as Snow Glue, this cafe is set up by an hotelier named Wasim Shah and is around 44.5 feet in diameter and 37.5 feet in height. The snow tables, each meant for 4 people, are carved in a circular fashion to serve 40 people. Tourists in large numbers are flocking Gulmarg to visit the Igloo Cafe to have an experience of a lifetime. हम पहली बार कश्मीर आए हैं। मैंने सुना था कि कश्मीर को जन्नत कहते हैं और वाकई ही ये जन्नत है। इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग सब देखा है और अभी हम गुलमर्ग के इग्लू होटल में खड़े हैं, जो हमारे गाइड इरफान ने लाया है, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये इतना खूबसूरत है कि इसका शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते कुछ। यूट्यूब पे आप जो देखते हो इसकी एक झलक भी नहीं, कुछ भी नहीं यूट्यूब पे आप देखते हो। अगर आप सच में देखना चाहते हो तो आप एक बार विंटर में कश्मीर आओ 7-8 दिन के लिए और ये सब प्लेसेस देखो। जो आपको यहाँ पे एहसास होगा वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। इतना खूबसूरत कश्मीर है। Snow Glue took 64 days to complete with around 25 people working on it. It has 2 sections, one for seating and the other for art space like wall carvings. Moreover, to give it a local touch, samovar, which is a traditional Kashmiri kettle, has been brought to use inside the cafe, and the benches have been covered with sheepskin. It is claimed to be the world's largest cafe, as it is more in height and diameter than the one in Switzerland, which according to the Guinness Book of World Records is the biggest igloo cafe. One of the members involved in establishment of the cafe said that they have already applied for the world record. हमने कोशिश की कि हम अपने कश्मीर के लिए एक ऐसी चीज़ बना सके जो सब कश्मीरीज प्राउडली बोल सके, हाँ हमारे कश्मीर में, हमारे गुलमर्ग में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू है। जी हमने अप्लाई किया है सर। पुराना रिकॉर्ड 2016 स्विट्जरलैंड में बना था। इस साल हमारा पुराने रिकॉर्ड से एटलीस्ट 4 फीट ऊपर है और डायमीटर भी हमारा ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम वो करें। अप्लाई किया हमने, इंशाल्लाह उनका भी हमें अपडेट आ जाएगा। और हमने इस इग्लू को सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं की है, एक एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है। तो ये जो हमारा इग्लू है आप देख सकते हैं, इसके 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक यहाँ का आर्ट स्पेस है जहाँ पर हम लोगों ने लोकल आर्टिस्ट जो है हमारे, उन लोगों ने आर्ट अपना बनाया है। आप देख सकते हैं वॉल कार्विंग्स की हुई हैं, आइस स्कल्पचर्स बनाए हैं। और दूसरा एक सेक्शन है जो कि हमारा सिटिंग स्पेस है, जहां पर आप बैठकर you can have some Kashmiri cuisine, you can sit, relax, enjoy the experience. To sit in a ice restaurant, an igloo restaurant in itself is a lifetime experience.
Last year too, an Igloo cafe was created in Gulmarg by Kola Hoi Green Group of Hotels and Resorts, which was claimed to be the Asia's biggest. It had 4 tables and could accommodate only 16 people at a time. It was for the first time that an Igloo cafe was created in India. This time again, they took the challenge and made the world's largest igloo. लास्ट ईयर ये कोलाई ग्रीन हाइट्स जो ये होटलियर है उन्होंने ट्राई किया था एक इग्लो बनाने का. एशिया का पहला इग्लो कैफे उन्होंने बनाया था लास्ट ईयर. जो फिर उन्होंने इस बार थोड़ा बड़ा किया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लो बना दिया. वो इसमें वसीम साहब हैं जो इनके एमडी हैं कोलाई ग्रीन हाइट्स के, उनका सारा रोल है. ये एक अच्छी अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए. गुलमर्ग मोस्टली फेमस है स्कीइंग के लिए, लेकिन इस तरह के जो भी अट्रैक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे. So this winter, if you want to experience this man-made wonder, then you have to hurry up before it melts and bids a final goodbye. The animal husbandry sector is flourishing rapidly in Jammu and Kashmir. With more farmers practicing it to have higher returns, the industry is opening doors for more advancements and technological developments. Moreover, an initiative called Integrated Sheep Development Scheme is helping farmers and breeders in increasing their profits by way of enhancing the productivity of their cattle. The breeders in Chappar village of Udhampur district are a few among the beneficiaries. Have a look. Animal husbandry, one of the branches of agriculture, has become a luring business in Jammu and Kashmir because of its profit-generating capacity and low investments. To give it a major boost, the government of Jammu and Kashmir launched Integrated Sheep Development Scheme in 2020 to promote establishment of sheep and goat units in the Union Territory. A budget of about Rs 10 crore was also sanctioned for the scheme. As per the J&K's Sheep Husbandry Department, by the end of March 2022, 921 sheep and goat units will get established under the scheme, providing direct employment to 5,954 people in the territory. The people of Chappar village in Udhampur have already started availing of the benefits and are reaping huge profits. और जी काम हम का 10 साल पुराना किया था शुरू, और डिपार्टमेंट ने दी थी हमें 10 बकरियां, कुछ 10 हमने पहले अपने भी ली थी, और शायद हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है इसमें से भी. अब हमारे पास 60-70 बकरी है और साल का हम 2-2.5 लाख की बेच देते हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से हमें शिल्ले भी मिले हैं बड़े, और कुछ हमने भी रखे हैं, और वेडू भी मिले हैं उनमें से ही. हम इस काम से काफ़ी खूब खुश हैं. अच्छा काम है जी. Integrated Sheep Development Scheme is an innovative initiative of the government meant to supplement and complement the existing and the new schemes of the Union Territory, as well as the centre that promote animal husbandry. Under the scheme, 25 sheep or 10 goats are provided to the beneficiaries free of cost. And then from the 3rd year of establishment, the Animal and Sheep Husbandry Department retrieves 5 or 2 female sheep or female goats from each beneficiary for the next 5 years till the livestock is fully retrieved. Similar concept is also followed in Rashtriya Krishi Vikas Yojana, which is an umbrella scheme for ensuring holistic development of agriculture and allied services.
In Udhampur's Chappar village, people are procuring sheep and goats under both the schemes that are in line with PM Modi's mission of doubling farmers' income. हमारे इस ब्लॉक में और भी यूनिट्स चल रहे हैं, करीब 8 यूनिट चल रहे हैं हमारे इस ब्लॉक में, जिसमें से 6 ISDS के और 2 RKVY के हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है ब्लॉक के कि अर्लियर ये होता था कि गांव से लोग माइग्रेट करते थे शहरों की तरफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे आपको हमारे ब्रीडर ने भी बताया होगा कि उनके पास इनकम जनरेट हो रही है, तो एक तो माइग्रेशन कम हुई है शहर की तरफ, और लोगों का जो रुझान है लाइफ स्टॉक और कहते हैं कि सेक्टर की तरफ वो बढ़ा है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, उसमें ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये ऑगुमेंट करता है उनकी इनकम को, या सप्लीमेंट करता है जो उनकी इनकम को जो वो एग्रीकल्चर से जनरेट करते हैं। उसी तर्ज पे हम इनको टाइम टू टाइम हेल्प देते रहते हैं। हम इनको टाइम टू टाइम डोजिंग, डीवर्मिंग करते हैं, डोजिंग करते हैं, डिपिंग करते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। और कोई भी अगर कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिसीज आउटब्रेक हो जाए, तो उस टाइम हम इनको हेल्प करते हैं ताकि इनका मिनिमम लॉस हो लाइफ स्टॉक का, और मैक्सिमम ये इनकम जनरेट कर सके और फर्दर ये प्रोपोगेट कर सके अपना कहते हैं ये बिजनेस। Even after having an enormous potential and conducive environment for sheep and goat farming, Jammu and Kashmir was facing a significant gap between demand and supply of mutton. But with the introduction of integrated sheep development scheme, mutton production has incremented by around 12 lakh kgs. Moreover, it has also proved to be a life-changing scheme for breeders, as now they are getting superior quality breeds that produce enough wool and mutton. And next we move on to our section of Incredible India, where today we will take you to immerse in the festivities of Basant Panchami. Celebrated in the honor of Hindu goddess Saraswati, the festival is observed every year on the 5th day of the Hindu month of Magh. It also marks the beginning of holy preparations, which falls 40 days after the festival. The spring season brings with itself a confluence of colors, cool breeze, good harvest and avid celebrations. Marking its arrival is the festival of Basant Panchami that was recently celebrated in different ways across the country. In Prayagraj city of Uttar Pradesh, devotees converged at the banks of Sangam, which is a confluence of rivers Ganges, Yamuna and mythical Saraswati, to take a dip in the holy waters. The administration made elaborate arrangements for the smooth completion of bathing festival, including tight security, cleanliness at ghats and other amenities for the devotees. आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती देवी की पूजन माँ सरस्वती देवी का पूजन किया जाता है, और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग में जो महत्वपूर्ण स्नान है, उनमें से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्नान है बसंत पंचमी का पर्व। माँ सरस्वती, जैसा कि हमारे जो आदिश रूप में एथेटिकल रूप में यहाँ सरस्वती जी विराजमान है, और इसी को लेकर यहाँ लोग आते हैं कि आज वाग देवी माँ की पूजा पर प्रार्थना हो जाए। In Kullu city of Himachal Pradesh, thousands of devotees gathered at the Raghunath temple. Idols of Lord Ram, Sita and Hanuman were brought in a beautifully decorated palanquin from the temple and placed in a wooden chariot. The chariot was then taken to the Rath Maidan, where the rituals marking the beginning of the celebrations were performed. Devotees rejoiced the occasion by playing with colors, and a holy sacrament was also distributed among all.
Basant Panchami marks the beginning of a 40-day celebration in Kullu, which concludes on the day of Holi. बसंत पंचमी जो है बहुत अच्छे से मनाई जाती है हर साल, तो इस साल भी यहाँ बसंत पंचमी बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। रघुनाथ जी को अपने मंदिर से बाहर निकाला है और रथ यात्रा भी यहाँ पर करवाई गई है और हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अभी रघुनाथ जी के दर्शन किए हैं और आज ही से जो है होली त्योहार की शुरुआत हुई है। 40 दिन पहले जो है बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिसमें होली त्योहार की शुरुआत की जाती है आज ही से। Meanwhile, Sikh devotees gathered at Gurudwara Chhehatta Sahib in Amritsar city of Punjab to pay their respects in front of Guru Granth Sahib. To mark the occasion of Basant Panchami, every year a fair is organized at the holy site, which is visited by people from across the country. Devotees also take a holy dip in the Sarovar of Gurudwara that is believed to cleanse the soul and cure the body of ailments. Moreover, it is also believed that if childless couples pray on this day, they get blessed with a child. देशां विदेशां ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ 12 ਪੰਚਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। The festival glorifies Goddess Saraswati, the Hindu goddess of knowledge and wisdom. The goddess is depicted as seated in a lotus. भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।